student. In this chapter we will going to discuss Charpit method for solving partial differential equation, basically non-linear partial differential equation. तो एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं व्हाट इज मीन बाय लीनियर एंड व्हाट इज मीन नॉन लीनियर पीडीज. तो नॉन लीनियर पीडीज का मतलब है कि आपकी जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसके अंदर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर या पी क्यू इस तरह के टर्म्स इन्वॉल्व होंगे. यानी कि ये जो भी आपका P दैट इज डेल एफ अपॉन डेल एक्स है, Q इज डेल एफ अपॉन डेल वाई, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इनकी डिग्री 1 से ज्यादा हो सकती है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था. व्हाट डू यू मीन बाय द लीनियर एंड नॉन लीनियर पीडीज? लीनियर पीडीज आर दोज पीडीज हुज डिग्री इज 1 एंड अदर देन 1 दैट इज हायर देन 1, दिस इज नॉन लीनियर पीडीज. सो इफ वी सी दिस पीडीज, दिस इज इफ एनी पीडीज विल कंटेन टर्म्स लाइक p square, so this degree is more than 1. Similarly, this is q square or multiplication of p, q, etc. So this type of equations are called non-linear equations. So how to find the solution of non-linear equations? Since yet we have only discussed the methods of finding the solution of linear PDEs, whether it would be higher order with constant coefficients. So here we will discuss what is the solution of non-linear PDEs. And basically Charpit method is the general method. There are several other methods by which we can find the solution of our nonlinear PDEs, and the Charpit method is general method. That means with the help of Charpit method we can find the solution of any nonlinear PDEs. But this method is little bit complicated, so we avoid this method until unless we don't have any other option. So but in this our syllabus Charpit method is there, so we will discuss this Charpit method is what. Suppose we have any equation, this is nonlinear equation of this form f x y z p q is equal to 0, where this z is the function of two variable x and y, p stand for del z upon del x, q stand for del z upon del y is equal to 0. Again with the help of total derivative. So with the help of total derivative we know this relation number 2. If you have remembered in your previous semester classes, dz is equal to basically dz is equal to del z upon del x into dx plus del z upon del y into dy. This is total derivative. If you see, this is nothing but the p. So this is p and this is q. So this equation become like this: dz is equal to p dx plus q dy. And next is again we find another relation. Capital F x comma y comma z pq is equal to 0. How we find? We will see later on. So we find this relation 3, and with the help of relation number 1 and relation number 3 we try to find the value of p and q. What is the value of p, what is the value of q, and after getting in the simplest form, not very complicated form, as simple as possible. And after getting the value of p and q, we put these values in equation number 2, dz is equal to p dx plus q dy, and integrate this equation. And after integration we get the solution z. So again I am telling you what we do. This equation is given to us, so whatever equation is given to us we will write this equation, everything we will take in the left hand side, and we assume that this is function of some f x y z p comma q is equal to 0. And then we write this equation and we find this relation and solve equation number 1 and 3 to get the value of p and q, and after getting the value of p and q we put this value here and get the solution. Now question is that how to find this relation, that means how to find this p and q. So basically there is another equation that is called Charpit auxiliary equation. Charpit auxiliary equation. I am not going the derivation of that, but you will have to remember. This is little bit complicated equation, so you will have to remember it. This is given by dp del f upon del x plus p del f upon del z is equal to dq del f upon del y plus q del f upon del z is equal to dz upon minus p del f upon del p minus q del f upon del q is equal to dx divided by minus del f upon del p dy divided by minus del f upon del y is equal to df upon 0. So this is auxiliary equation.
as we discussed in Lagrange's method, there was another auxiliary equation. There we have only 3 factors. So here 5 factors are there. So we choose some suitable factor in this auxiliary equation to get the value of P and Q. Do remember, we won't take any fraction in which neither P or nor Q, or we are getting some arbitrary solution without P and Q. At least one P or Q must be there. So we take fractions like that. So the solution will be in terms of P and Q. So after getting the solution in terms of P and Q, then we use equation number 1 to get the value of again P and Q and put this value here and get the solution. I am writing some working rule here. So with the help of this working rule, you will be very confident to get the solution. Working rule. So first rule says, rewrite our equation like equation number 1. So rewrite given equation in form of equation number 1. In form of equation number 1. Okay. Second, find del f upon del x, del f upon del y upon del z, del f upon del p, del f upon del q. Why we are finding all these values? Since it is required in this auxiliary equation. Third, find Charpit's auxiliary equation. Equation given by equation number 4. Given by equation number 4. Okay. Next step, take any 2 fractions of 4 to get solution having at least P or Q in it. This is important point. At least P or Q, दोनों में से एक होना चाहिए. Okay. Now we find the value of P and Q from equation number 1 and value from step number 4. If we get P from here, we put the value of P in equation number 1 to get the value of Q. If we get Q here, we put this value of Q in equation number 1 to get the value of P in terms of rest of the variables. So after getting this is equation number 6, after getting P and Q, we put this value, these values in our equation number, this is equation number 2. In equation number 2 and integrate it to get the solution of given equation. Okay, so I hope you have understood this thing. एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल की हेल्प से को समझने की कोशिश करते हैं. आई होप कि आपकी समझ में आ जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल.
एग्जाम्पल है दिस इज P 1 plus Q square plus B minus Z Q is equal to 0. Solve by Charpit method. So let us consider example P 1 plus Q square plus B minus Z Q is equal to 0. Solve by Charpit method. So step number 1, let us take solution. तो हमने पहले स्टेप में डिस्कस किया था कि हम जो भी इक्वेशन है उसके सारे पार्ट, सारे जितने भी टर्म्स हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, इसको f मान लेंगे. सो वी आर कंसिडरिंग f. सो बेसिकली दिस इज f x, y, z p q is equal to p 1 plus q square plus b minus z q is equal to 0. This is question number 1. And second step में we will find what is our auxiliary equation. So auxiliary equation find करने से पहले हम find करेंगे what is the value of del f upon del x. So from here del f upon del x is equal to 0. Del f upon del y, this is again 0. Del f upon del z, this value is minus q. Del f upon del p is equal to 1 plus q square. Del f upon del q is equal to 2p minus b minus z. Okay, so next, Charpit's auxiliary equation. Auxiliary equation is given by. So what is the equation? This is dp upon del f upon del x plus p del f upon del z is equal to dq upon del f upon del y plus p del f upon del z is equal to dz upon minus p del f upon del p minus q del f upon del q is equal to dx upon minus del f upon del p is equal to dy upon minus del f upon del q is equal to df upon 0. तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने निकाली हुई हैं, वो सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे. dp अपॉन del f अपॉन del x इज 0, 0 प्लस p और del f अपॉन del z की वैल्यू है माइनस q. दिस इज minus q is equal to dq upon del f upon del z फिर 0 है. This is basically this value is q rather than p. This is q. So this is q into minus q is equal to dz upon, this is minus p del f upon del p. This is 1 plus q square minus q del f upon del q. This is 2p minus b minus z is equal to dx upon del f upon del p, that is 1 upon q square. This is of negative sign, and del f upon del q माइनस का है तो दिस इज माइनस 2p प्लस का हो जाएगा ये
b minus z is equal to df। तो हम यहां पे फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शन लेने पे हमें क्या मिल जाएगा, यहां से dp अपॉन माइनस पी क्यू इज इक्वल टू dq अपॉन माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, q से पावर कैंसिल आउट हो गई, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट q इज इक्वल टू cp। सो दिस इज द पॉइंट विच इज टू रिमेंबर, q इज इक्वल टू cp। अब जो हमारी गिवन इक्वेशन है, अब यहां से हमको वैल्यू मिल गई q की। अब हम इस q की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ p। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q in equation number 1 to get the value of this is, यहाँ तक ठीक है, this is putting the value of q in equation number 1। so what we get basically, यहाँ पे वैल्यू रख दी, that was equation number 1। so we get p into 1 प्लस c स्क्वायर p स्क्वायर, यहाँ पे q था, इफ यू सी दिस इज q, इस तरह से यहां पर भी q है, तो ये हो जाएगा प्लस v माइनस जेड इंटू सी पी इज इक्वल टू 0। दिस इज p1 प्लस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, इस क्वांटिटी को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके गए, तो हो गया जेड माइनस बी इंटू सी पी। माइनस साइन को बैलेंस करने के लिए हमने चेंज कर दिया, p से p कैंसिल आउट हो गया, विच इंप्लाइज c स्क्वायर p स्क्वायर इज इक्वल टू जेड माइनस बी माइनस 1, विच इंप्लाइज c बचेगा, यहाँ पे सी बी होगा, यहाँ पे दिस इज c, p से p कैंसिल आउट हुआ है, विच इंप्लाइज p is equal to under root c z minus b minus 1 divided by c। This is important, you have to remember it। कैसे किया है सॉल्व, सिंपल कैलकुलेशन है। Q was Cp, Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर दी, तो 1 में इक्वेशन पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, वी गेट P इज इक्वल टू अंडर रूट C ब्रैकेट में Z माइनस B माइनस सॉरी सी बी होगा यहाँ पर, दिस क्वांटिटी इज बेसिकली C इन ब्रैकेट Z माइनस B माइनस 1 अंडर रूट divided by c। so which implies, इसको अगर हम नाम दे दें इक्वेशन का, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, and let us suppose this is equation number 5। so this is the value of p in terms of z। Similarly, we will find the value of q in terms of z। कैसे फाइंड करेंगे, इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 and 5 व्हाट वी गेट, इक्वेशन नंबर 4 और 5 से q इज इक्वल टू, q की वैल्यू यहां रखी, c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल गेट अंडर रूट c z माइनस
b minus 1. This is equation number, let us suppose 6. P और Q की वैल्यू सिंपल फॉर्म में आ गई है. Now putting the value of P and Q in equation, तो टोटल डेरिवेटिव इक्वेशन थी हमारी dz इज इक्वल टू p dx प्लस q dy. क्या मिलेगा यहां से? dz इज इक्वल टू p की वैल्यू अंडर रूट c z माइनस b माइनस 1 डिवाइडेड बाई c dx प्लस अंडर रूट c z माइनस b माइनस 1 dy. तो इसमें हम वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं. जो भी हमारी z के टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ ले लेंगे, बाकी टर्म एक तरफ. तो देखिए ये इसका न्यूमरेटर ये और दोनों कॉमन हो रहे हैं, तो ये दोनों कॉमन हो जाएंगे. सो वी विल गेट अंडर रूट c z माइनस b माइनस 1 डिवाइडेड बाई c भी कॉमन ले लेते हैं. ब्रैकेट में आपको यहाँ पे मिलेगा dx प्लस c dy इक्वल टू dz. इस क्वांटिटी को इधर लेके जाएंगे, तो वी विल गेट c dz, दिस इज अंडर रूट c z माइनस b माइनस 1 इज इक्वल टू dx प्लस c dy. इसको इंटीग्रेट किया, तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट दिस इज नथिंग बट अंडर रूट c z माइनस b माइनस 1 इक्वल टू x प्लस cy प्लस सम कांस्टेंट c1. अगर इस क्वांटिटी को आप विद रेस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करोगे, इनफैक्ट तो यहाँ पे 2 टाइम्स और होगा, यू विल गेट दिस क्वांटिटी. इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो 1/2, तो 1/2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. और जब आप इस पूरे सिस्टम को सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट दिस. दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 8. इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 8. इक्वेशन नंबर 8 को इंटीग्रेट कर दिया, सो वी गेट दिस क्वांटिटी and this is the solution. This is required solution. एक बार हम फिर से समझ लेते हैं कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे किया है, how we solve this question. So let us see. Suppose we have given this equation and we have to solve, this is non-linear equation. Why it is non-linear? Since this is q square, and if you multiply this p, that is p q square. So this is non-linear equation and we have to solve this equation by the help of Charpit method. So we write this equation in this form: f x by z p q is equal to p 1 plus q square plus b minus z is b minus z q is equal to 0. Then we find del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z, del f upon del p and del y upon del q. And then we write our Charpit auxiliary equation, which is given by this equation number 2. And we put all these values which is required in this Charpit equation. So we concluded this equation number 3. And we take 2 suitable factors such that the solution would be these 2 factors, at least one p or q must be there. So here we took first and second fraction. So with the solving first and second fraction, we get q is equal to cp. And how to solve these fractions we have already discussed in Lagrange's method of multipliers, that is Lagrange's method of solving PDEs. So here q is equal to cp. So the value of q, we put this value in equation number 1, we get the value of p. The p is equal to under root c z minus b minus 1 upon c. So this value of p is the simplest form in terms of x, y, z. So we put this value of p in equation number 4 to get the value of q in the simplest form. This is given by equation number 6.
So after getting the value of P and Q in the simplest form, we put this value in this another equation. This is equation number 7. Z is equal to P dx plus Q dy. So here we put this value dz and the value of P and Q and integrate this equation. And after integration, we get the solution, and this is given by this. So this is our required solution. एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, then you would be able to solve. So next lecture, maybe I will take some examples of Charpit method or some other factor. Thank you very much.